हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MTE11 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट और बेस्ड पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, द प्रोपोर्शन ऑफ टेल्स इन 1000 टॉसेस ऑफ अ कॉइन इज डिस्क्रीट वेरिएबल। तो हम कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू सिंस प्रोपोर्शन ऑफ टेल्स में बी 0,001, 0.002, 0.003, so on or 1, but no values in between these numbers. इसके बाद दूसरा, for any 5 events happening of at least 2 events and not happening of more than 1 are complementary events. तो हम कहेंगे the given statement is true. Happening of at least 2 events out of 5 events is complementary to happening of only one of the 5 events or none of the 5 events happening. Not happening of more than one event means the same and hence complementary. इसके बाद तीसरा है, the abscissa of the point of intersection of the two ogives of less than type and more than type gives the mean of the data. तो हम कहेंगे the given statement is false. The abscissa of the point of intersection of the two ogives of less than type and more than type gives the median of the data. इसके बाद अगला, if x follows t distribution with n degrees of freedom, x square will follow chi square distribution with n degrees of freedom. तो हम कहेंगे the given statement is false. If x follows t distribution with n degrees of freedom, x square will follow f distribution, not chi square distribution with n degrees of freedom. इसके बाद अगला, a random sample is drawn from normal population with unknown parameters mu and sigma square. Consider hypothesis h1, mu is equal to mu naught, h2 is equal to sigma square is equal to sigma naught square, and h3 mu greater than or equal to mu 0. h1 and h2 are simple hypothesis and h3 is composite hypothesis. तो हम कहेंगे the given statement is false. For example, let x be a random variable having a normal distribution with mean mu and variance sigma square. If both mu and sigma square are known, omega is equal to the set of all ordered pairs mu, sigma square such that mu is greater than minus sigma and less than sigma, sigma square greater than 0. The hypothesis h, mu greater than mu naught, sigma square greater than 0, h, mu less than or equal to mu naught, sigma square greater than 0, h, mu is equal to mu naught, sigma square, where mu naught is a specified constant, are all composite. On the other hand, if sigma square is known, then h, mu is equal to mu naught is a simple hypothesis. इसके बाद अगला, if x bar is a consistent estimator of population mean theta, then x bar square is a consistent estimator of theta square. तो कहेंगे the given statement is true since x bar is a consistent estimator of population mean theta, therefore when n tends to infinity, then probability of mod t minus theta, यहाँ x बार को हम t मान कर चलते हैं, ठीक है, तो mod t minus theta less than epsilon greater than 1 minus n. इसी तरह से probability of, यहाँ पर इसे हम इस तरह से लिखेंगे minus epsilon less than t minus theta less than epsilon greater than 1 minus n. तो probability of theta minus epsilon less than t less than theta plus epsilon greater than 1 minus n. इसी तरह से यहाँ पर probability of theta square minus 2 theta epsilon plus epsilon square less than t square, मतलब तीनों पर स्क्वायर कर देंगे, less than theta square plus 2 theta epsilon plus epsilon square greater than 1 minus n. Probability of theta square minus epsilon square minus 2 theta epsilon less than t square less than theta square plus epsilon square plus 2 theta epsilon greater than 1 minus n. यहाँ since if theta square minus 2 theta epsilon plus epsilon square less than t square, then theta square minus 2 theta epsilon plus epsilon square minus 2 epsilon square less than t square. तो
यहाँ पर फिर सो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2 थीटा एप्सिलॉन लेस देन टी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2 थीटा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 माइनस एन। अब इफ एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2 थीटा एप्सिलॉन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस एप्सिलॉन 1 लेस देन टी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 1 माइनस एन। प्रोबेबिलिटी ऑफ mod टी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 1 माइनस एन। देयरफॉर टी स्क्वायर या एक्स बार स्क्वायर इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। इसके बाद आते हैं अगला, if for two events A and B it is known that probability of A is equal to 0 and probability of B greater than 0, then probability of A by B greater than 0। तो हम कहेंगे the given statement is false since probability of A is equal to 0, therefore A is equal to 5, यानी एक null set है। so A intersection B is equal to 5, so probability of A intersection B is equal to 0। A probability of A by B is equal to probability of A intersection B by probability of B is equal to 0 by probability of B is equal to 0, hence the given statement is false। इसके बाद अगला है, in a relative frequency histogram the area of each rectangle represents the relative frequency of that class। तो हम कहेंगे the given statement is true। in a relative frequency histogram the area of each rectangle represents the product of the class width and the frequency density, that is the class frequency। okay, इसके बाद अगला, the frequency density of a class is defined as class frequency divided by total number of observations। तो हम कहेंगे the given statement is false, the frequency density of a class is defined as class frequency divided by class width। उसके बाद अगला, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स आर कंसिस्टेंट एंड यूनिक। तो कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट फॉर एग्जांपल लेट एक्स एन, ये काउंटर एग्जांपल है, लेट एक्स एन बी ड्रॉन आई डी फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड वेरियंस 1 डिस्ट्रीब्यूशन। कंसिडर द एस्टिमेटर टी of x1 x2 x3 up to xn is equal to 1 plus x bar is equal to 1 plus 1 by n summation xn I is equal to 1 to n। the distribution of t of x1 x2 up to xn is equal to 1 plus x bar is normal distribution with mean mu plus 1 and variance 1 by under root n। it converges to mu plus 1 not equal to mu, which is showing its inconsistency। इसके बाद अगला, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स आर ऑलवेज यूनिक। तो हम कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ काउंटर एग्जांपल के रूप में लेट x1 x2 x3 अप टू xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर थीटा माइनस 1/2 to theta plus 1/2 where theta is unknown and theta belongs to omega is equal to a set of elements x such that x is greater than minus infinity and less than infinity। the likelihood is ln theta is equal to 1 if theta minus 1/2 less than or equal to xi and xi less than or equal to theta plus 1/2 for I is equal to 1, 2, up to n is equal to 0 अदरवाइज। ठीक है, ln थीटा का वैल्यू 0 अदरवाइज। इसके बाद इसी तरह से और ln थीटा इज इक्वल टू 1 इफ थीटा माइनस 1/2 लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 x2 up to xn and less than or equal to maximum of x1 x2 up to xn and less than or equal to theta plus 1/2 और इसका वैल्यू 0 अदरवाइज। तो हेयर वी गेट मोर देन 1 मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमेशा यूनिक नहीं होता है। इसके बाद अगला, इफ़ टू इवेंट्स A and B आर म्यूचुअली डिसजॉइंट देन A and B आर इंडिपेंडेंट। हम कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। Two mutually disjoint events can never be independent except in the case that one of the events is null। Okay students, thanks for watching।